I can. एक सेकंड होगा उसका, ये ना एक सेकंड। No worries. Okay. Um, Heather is still gonna be like for a trial, right? So it's gonna be a few days or so. Um, I'm not sure how we're gonna figure this out. I'm working on a few things to figure this meet link out. But usually Discord should work just fine, but I'm not sure why you guys can't hear me on Discord. In other groups, Discord is working just fine. हेलो, जी, दिस इज गोइंग नंबर सैन रिकॉर्ड। ठीक है. आप let's start with the calculator. Okay, so the purchase price परचेज प्राइस 240। 240. Okay. The listed price, yeah. एक सेकंड, 220। ये कैलकुलेटर में It's okay. We can go with 220. That's fine. Down payment डाउन पेमेंट 22। 22,000. The monthly rent ऐसे तो एक sure, no worries. तो ये जो आपने मुझे नंबर दिया था टिकटॉक वाले बंदे का, जी, वो उसने डील क्लोज कर ली है, बस उसको आगे प्रोसीड करना है ठीक है. और आपने रिव्यू करना है उसको। Okay, let's review it today. उसको आज कर लेते हैं रिव्यू. ओके, मैं आपको डिटेल सेंड करता हूँ उसके इंश्योरेंस वगैरह जो भी मैंने कैलकुलेट किया है। आप मैंने जो उसको. खुद से हम्म, कैलकुलेशन की है उस पर वो तकरीबन 33% रिटर्न आ रहा है, nice. कैश एंड कैश। That's good. और जो एंट्री फी है वो भी तकरीबन 12 to 14% है। Okay, that's good. Let me finish with Ahmed and then I'll talk to you. सही तो ये What's rental revenue? 1900। Okay, and that's ये जो अभी मतलब कोई रह रहा है या फिर वेकेंट है? नहीं, वीकेंड है। ठीक है, तो ये आपने ज़िलो से निकाला है. यस। और प्रॉपर्टी टैक्स इंश्योरेंस. प्रॉपर्टी टैक्स 126 है। ठीक है, इंश्योरेंस. 45। ठीक है. तो इसमें आपने क्या कितना कैश एंड कैश आ रहा है आपका? मेरे पास 21 आ रहा है। और कितने इयर्स की अमोर्टाइजेशन करी है आपने? 40 ईयर्स के फुल 5 ईयर। आपने इसको बता दिया है कि कितने वो करना है पेमेंट प्लान का?
जी 400 अच्छा 400 बताया, और आपने कितने साल का बताया? 7 years 7 years. refinance content ओके, सो 400, ये तो 30 बता रहा है मुझे, कैश एंड कैश। इसमें HOA फ़ी तो नहीं है? नहीं है इसमें um, आपने वैकेंसी हाँ शायद वैकेंसी मेरे पर को भी आता है आपने एमिटाइजेशन ईयर एग्जैक्टली बताओ क्या लिखा है? 40 है आपने 40 40 लिखा है, तो फिर तो 28 बन रहा है फिर, और 450 बन रही है मंथली पेमेंट। मे बी आपने यहाँ पे ज़्यादा, तो यहाँ पे 5000 लिखा है। नहीं How is it different? Maybe the purchase price is different and down payment. जी लिस्टेड प्राइस 20 हाँ, बस यही है वो तो आप मैसेज भेज देना आप स्क्रीनशॉट भेजो उसका मुझे, क्योंकि आई थिंक कि डाउन पेमेंट या कहीं से मसला होगा, क्योंकि इसके अलावा तो सब कुछ सेम होना चाहिए। गाइज इफ़ यू हैव, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है ना जो हमको देखनी है, तो मेक श्योर कि आपके सारे नंबर्स रेडी हैं, ठीक है, ताकि फिर कोई और, जैसे अभी हैदर वेट कर रहा है, कोई और स्टूडेंट वेट कर रहा है, तो हम उनका टाइम ज़्यादा ना लें, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टीज़ के नंबर सारे रेडी रखने हैं, परचेज प्राइस होनी चाहिए, डाउन पेमेंट होनी चाहिए, रेंट एक होना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये सब हमारे पास होंगे तो देन वी कैन चेक द डील इज़ गुड और बैड। परफेक्ट, आपने चैट पे भेजी है। जी 30% बन रहे थे 454, 17, 40%, 22, 420. Yeah, so now it's good. Now it's becoming good. It's vacant, right? यस Yeah, agar vacant है तो I think I was thinking maybe we can increase a little bit rehab, but if it's vacant, then we'll keep it at 30, 10%, 10%, 5%. Yeah, I think we are good to go for this one. तो सबमिट कर दिए वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आपने कब करी सबमिट उसको? कल किया था, आज किया था? अभी एक दो दिन हाँ, तो वो न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म में गया होगा, राइट? जी गूगल फॉर्म वो में तो बस नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा जी, वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद में कह रहे हाँ वो तो आज ही इसको भेज देंगे, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। सो आपने उसको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, 3 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट: परचेज प्राइस, डाउन पेमेंट और मंथली पेमेंट। ही इज़ एग्री ऑन ऑल दैट, राइट? हाँ जी और 9% इंटरेस्ट जो हम इसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। जी वेरी गुड, इट्स अ गुड डील, इट्स अ वेरी गुड डील। I don't know city and state, but that's okay. That's not a problem. But as long as the numbers make sense. अच्छा, सिटी एंड स्टेट में ये भी देखना होता है आपको कि ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल इन द मिडल ऑफ नो वेयर हैं, राइट? अगर ऐसा होता है तो देन इवन एट 30 इट्स गोना बी वेरी हार्ड, बिकॉज कोई रहने वाला है नहीं, तो उसका मतलब इन्वेस्टर उसको रेंट करवा नहीं पाएगा। जब उसके लिए करवा नहीं पाएगा तो उसके लिए फिर ये प्रॉपर्टी बर्डन बन जाएगी। बट द नंबर्स लुक्स गुड, इट्स वेरी गुड डील हेयर, ओके, वेरी गुड जॉब। आपने सबमिट करा दिया, आई थिंक दैट्स ऑल यू नीड टू नो, ओके। Just follow up with me today sometime, and I'll let you know that we have sent him the purchase contract or not. ठीक है और उसमें मार्केट मारियो का मैसेज आया था कल। हाँ, उसकी से थोड़ी सी बात हुई थी मेरी मैसेज पे, वो चीज़ें मांगता है, वो चीज़ें उसने स्क्रीनशॉट भेजी हैं, पता नहीं किस चीज़ की स्क्रीनशॉट है, बट you're asking me to forgo 200K in interest. Seems to me you're not talking into the account the net present value of the money. Above chart is with a 7-year balloon payment. तो उसने 7 year की इंस्टॉलमेंट प्लान भेजा है, 1 to 7 years, इंटरेस्ट ऑफ 200,000 एंड 6753.
Let me actually call him again and see if he's able to talk. Let me get his deal out. अहमद, ये जो डील है ना, इसके आपने नंबर सेव रखना है. मैंने आपको बताया था ना किस तरह आपको फ़ाइल को बता के कॉपी करनी है, और कॉपी करने के बाद उस प्रॉपर्टी के नाम से एक फ़ोल्डर बना दें जिसमें सारे नंबर्स जाते हैं, और उस प्रॉपर्टी के नाम से वो सेव कर दें. ठीक है. ठीक है। Are you a single family? But good job on the last property. The numbers look very good. You got exactly what we need, nothing more, nothing less. So good job. I'm gonna pull up the numbers on Mario's property. I'm trying to figure out where I saved it. Okay, so that's numbers. Let me call Mario and figure out how we're gonna take his property. Because I feel like we are close. He just doesn't understand what kind of issue he's in. Hello. Hey Mario, how are you doing? Hi, thank you. Very good. Said? Yeah, this is Who Said. this? Ahmad? Said. Hi. Hello. Hi, Said. Do you have a minute? I don't want to take your Yes, your I do time. have a minute. But I told you yesterday that with the numbers that you are sending, it doesn't work. I don't know if you understand what the net present value of money is. Mm-hmm. I don't know if you understand that. There's got to be an interest rate because, and I send you a little chart showing that if we wait Yes. 7 years to refinance, I am losing like $200,000. Right. So I am not going to do it. Okay. I think we're too far apart. I think that your Th- th- model that- is going to be very hard for somebody to do it. Okay, Mr. Mario, I completely agree. My job is not to make you feel that you're losing, okay? So I just want to I'm figure not out. losing, I'm just Yeah. telling you why. Yeah, for sure. I just want to figure out how we can make this work, right? That's all I'm trying to figure out. If at the end of the day deal doesn't make sense to you, it doesn't make sense to you. I'm okay with that. I'm not gonna pressure you. But I really wanna figure out a way to buy this property. I feel like these properties are good for our portfolio, and I feel like you also might wanna sell it too. So I think we're in the right track. We just need to figure out the terms that make sense for you and for me as well. Is that correct? Yeah, I already gave you those terms. Yeah, exactly. I'll So give you, I'll even drop the interest rate to 6.75 instead of the 7.75. 6.75 is a very good interest rate right now for owner finance. You're Right. not going to get any cheaper than that. right. So if you guys want to put $100,000 down for the two houses,
and you want to do a 7-year balloon payment with owner finance, I'm open to that. But your monthly payment for the two houses is like $2,000 or so. So, so the first option we gave with the low down payment, that was basically the first position, right? Because we were just coming money out of pocket and giving you, but you didn't like that. So the second one, the strategy is sort of second position, but you're not in second position. You're actually in a trust. I can describe that later, but in that one, we're actually getting the down payment with the interest, right? So we're gonna get like a regular down payment as we would, interest as we would around 8%, because we're buying two property. So our interest will be a little bit higher for residential. So we're gonna get the down payment finance around $114,000 at a interest rate of about 8%, right? So You are getting that from your bank? correct, for the bank and the private money lenders. 8%, and I'm giving you 6.75%. Completely agree. So when we go to the I second am place, better than your bank. I agree. But the issue is because I'm financing the down payment, the rest of the money you are financing us, correct? So the bank is financing at 8%. You're financing for I think 6.7. You said at the 6.7%. Now the issue with these two interest rate, my total interest rate is coming up to like 13 and 14%, right? So at this point, No, you don't add them. huh? You do not add them. That's the thing. If I That is do not, wrong. That's a wrong analysis. yeah, I Your will. total interest rate is more like 7%, not 14%. You do not add the interest rates. Right. So So you are wrong in your analysis. no. So basically, how it works is that if I'm financing the down payment, right, I have to pay the bank that down payment back. Similarly, I have to pay your money back to you. So there's two That people is correct. I'm So are you financing with. proposing to the bank to pay them only $100 a month? No. So we No, are they are not proposing. going to accept that, right? Your Well, bank is not going to accept that you pay them just a little bit every month. Your bank is going to require that you pay whatever the 100,014 correct. down that they are financing at 8%. I don't know what the payment is, but that's what the bank will require. Yes. So It is the same with me. Same as the bank, they have their interest rate and they have the monthly payment. I have my interest rate, and which is better, and I have my monthly payment. exactly. So Yeah, so we no actually, difference. yeah, we actually You speak to the cannot tell bank. me I'm going to pay only $200 for each house or whatever, but Right. because I will be losing 200,000 over 7 years. So I'm Right. giving you the house for free. No, so the issue with the house is the rental income, right? Because our cash flow is almost negative, Yeah, right? if you And don't have the capital to put the $100,000 down, yes, I understand that. no, it's not about the Yeah. capital. I can If bring you you have to almost borrow $1 million for the down in cash. payment and then borrow for, you're going to be losing money every month. I told you that from the beginning. Yes, You but then will be my losing money. but my counter argument on that, like if I'm putting 100,000 of my cash, putting a cash is not a problem. As an investor, we have a lot of connection. I can bring $1 million down cash, right? But the Okay, cash has buy to your make cash sense. then. Well, that's the thing. The cash has to make sense because if I'm getting a return of 5%, 3%, no investor would want to come in as a partner with me, right? Exactly. I agree with you, Saeed. I think you're right. I think your model doesn't work. So it doesn't work for me, and also it does not work for you. Well, So it that's where doesn't make sense. that's where I want to try to engineer it a way where it can work, right? So because I'm taking two loans on the same two houses, bank I cannot play with because they're gonna need the interest and we're gonna give them that $1,000. But for the seller financing, because it's between you and me discussion, we can figure out a payment that makes sense for us to cash flow No, and we still don't buy pay. the house No, from you. no. The payment is mathematics.
Right. You are Arab, I think, and so the Arabs, they are good with mathematics. They're the ones that brought algebra to the world, Right. right? Right. So it is not negotiation. It is just numbers. You put a loan amount, you put an interest rate, you put the number of years for the term, you put the balloon payment after 7 years, and you're going to get your monthly payment. That is a mathematical arithmetic of our Correct. numbers. I It's not agree. negotiation. I You can agree. negotiate the rate, you can negotiate a higher down payment and lower seller finance loan, whatever. But I will not take less than 6.75 interest rate because it doesn't make any sense. And my interest rate is even lower than your bank. Right. So how about this? Can I send you a picture? Because I'm actually working on numbers as you're talking to me, just to kind of understand where I'm at. So let's say I give you, you said 6.8%? 6.8%. Mm-hmm. Okay, let's do 6.8. And what is the down payment you're requiring? 114,000, like you mentioned. Well, 113,000 is with financing, right? So that means I have to add the bank. If you want me to Okay. remove the bank, then I have to bring it down. I always ask at least 15% down payment. So you can put on your formula 15%. down payment. Okay, give me 1 second. So 15% would be around, I don't know, like 67-ish, 14.7%. Let me actually just go round figure. Let's do 70. Okay. So 15% of 230 more or less, it is it's like 32,000. yeah, 32 something, but we're 64,000, about 63,000. yeah. So in total, we're just gonna take 70 for both houses, and then you requested 6.8% interest, and then the rental income for both house is about $3,475, right? So I took off my management costs and vacancy, and capex. So basically, as we speak, for 70 years of amortization, right? So that gonna cost 7 years. no, for the amortization. What is 7 years. well? Amortization 30 years. 30 years. Okay, let's do 30 years. Yeah, that's or less if you want to do less, but 30 years at least. Okay, no worries at all. Let me actually send you a quick pictures of what I'm looking at. Okay. With a 7-year balloon. Yeah, so I know that it does not work for you, but if you want to send me a picture, I'll be happy to see it. But I have to look for myself also. If it doesn't work for you, that's your problem. I see that. Yeah. Okay. So currently, as we speak, on your numbers. I see this. Your monthly payment is 2,500. Right. And okay. So what are you saying now? So That is correct. So if you see in the cash flow column, it says red and 11.59%, right? So my cash on cash is actually negative, and I'm gonna lose about Okay, well, that's 812. your problem, not mine. That's because you have to put capital. But again, Said, you're a good person. But if it does not work for you, that's fine. You have to look somewhere else. I completely understand, but the issue is not just it doesn't work for me. It doesn't work for any investor, right? Any investor would not ever want to lose for 812. I am getting $1,800 a month in rent. I'm not in a hurry to sell it. The issue is you might be losing money, in my opinion. Will continue to appreciate, and I get my rental. I'm not going to sell it. I'm going to get less than the numbers you're showing me there. So I have to let you go because I'm getting a client calling me, okay? Sure. We'll chat later. Thank you. Thank you. Bye. Well, it looks like he's not budging.
not even a little bit. तो अहमद इस पे बेसिकली करना ये कि आपने इसको मेक श्योर करना है कि आप इससे फॉलो अप करते रहें. मे बी 1 week लेटर डू अ फॉलो अप. ओके, कैन यू हियर मी? Just do a follow up, and not in a way that, hey Mario, what's going on, do you think of selling the house? Not in that way. Just ask him for how is he doing, how's his wife, kids, whatever, how's everything doing, but not close to the property. Give it some time to not discuss about the property, but don't let him go, because we built such a good connections. He understands us, where we are coming, where our issue is, and he knows that he's wrong. The funny thing is, he knows that he's wrong, that nobody's going to buy on his terms, but he still wants those terms, right? So the discussion only here would be around something like that, would be like on our numbers, because he will not today, not tomorrow, not 100 days from now, not 100 years from now, he's not going to sell this house. He's just going to stick with it when he's going to be very 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 tired. जब वो बहुत थक जाएगा, सेल कि हो नहीं रहा, सेल मैं मार्केट पे लगा हुआ हूँ, मेरी वैल्यू गिरती जा रही है, एंड देन ही इज़ गोना थिंक ऑफ दिस नंबर्स. ठीक है, तो आई थिंक इसको जस्ट फॉलो अप रखो. मे बी इसको रिमाइंडर अपने साथ रखो, मे बी वीकली वंस, जस्ट से हे मारियो, हाउ यू डूइंग, जस्ट चेक इन, is everything okay with you? Okay, that's it. I don't even want you to talk about the property itself. Just hello, hi, how are the kids, how's the wife, how's the weather around, these type of questions. Okay, Okay. and maybe once in a month आप इसको property का पूछ लेना. शेयर भी जो मैंने प्रॉपर्टी पाई है ना, इसमें वो टैक्स गलत दिया तो ये ज़्यादा फ्लो आता है. वो 22% मिल रहा है. जो अभी जो हमने ये जो पहले खुली हुई थी, कौन सी डील की बात कर, जो अभी आप पहले बात करी थी? इससे पहले जो देखी, जो सबमिट की, ये वाली 30% कैश ऑन कैश, इसमें टैक्स क्या आ रहा है? इसमें टैक्स Thanks for the like, Mariam, I appreciate it. If you have any questions, let me know. I will definitely love to help. 251. Yeah, that's probably why. और आपने insurance? 75 Yeah, that makes sense. और रेंटल रेवेन्यू 80. Ad revenue 18 है. Yeah, so that's cutting it close. I mean, if इसको अगर आपने 400 दिया है, तो I think that might be fine. 45 आपने कितना इसको दिया है, बोला है 400 बोला है? जी. It's a little bit close. I mean, we could do that. और उसने इन सब नंबर पे एग्री कर दिया? हाँ जी, और उसने कहा कि हो सकती है तो मुझे क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर दो. मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट में लिख के, तो ओके श्योर. हाँ, तो ये सब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया. Mario texted, thank you Sayed for your interest. I'm aware that unless you buy them cash or large down payment of your own money, I will not work for your investor group. इसको मैं कैसे, like large down payment at 6%, I'm giving you a very good interest rate. He's saying, what's the Texas interest rate? I mean, I don't think 6 point is it's a good one. I think with the bank I can get a lot less, cheaper. I don't know. $6.63 for 15-year amortization. Let me check, because I feel like he's just BSing me right now. So 30-year fix is about 30. So
So he's saying like, oh, I'm giving you the best interest rate, blah blah blah. But that this is wrong. For 30 years, I'm getting 5%, but the issue is I still lose money at this rate. Okay, now let me go back to what we were talking about. Um, I mean, we're okay at this rate. We can try to figure this out. Send the number, send the contract in, and see what we can do. Um, yeah, so it's a little bit less, but let's see. Let's see. We can try to figure something out. The at the best we could do is probably lower down the payment, or down payment. But I guess he's not gonna budge at that time. But we can start with 23% cash flow. You submitted it, right? You submitted with the correct numbers. आपने सही नंबर के साथ सबमिट किया है? जी Okay, that's okay. Then we'll send the numbers and go from there. Okay. But it's a little bit low, from my understanding. We still need to be a little bit more. Maybe if I bring down payment to, let's say, 1.5, that's where we're looking at. Okay, makes sense. What we can do is that we can increase a bit of a purchase price as well to 13%. Do you have a negotiation room, or you can't talk right now? It's already done. अभी क्या पूछ रहे वो हैं? बस वो कहता मैं और निकल जाता मैं बस कॉन्ट्रैक्ट देख Okay, that's fine then. Let's go with that. But remember, for the next properties, we wanna keep a little bit more of this cash and cash, right? If it's vacant, if it's someone is living in there, 100% I'll ask you to join. Send it in and forget about it. But that's okay. इसमें ओनर ही रह गए It's an owner rara. Okay, so it's owner occupied. Yeah, so that means I cannot play with rehab costs. When owner will leave, there's definitely be things that we need to get it fixed. So it's gonna cost that much anyways. But let's see. We'll send that in. We'll send the contract in. We'll start looking for the investors. Hopefully, we'll find without an issue. Okay. Okay. Perfect. Ahmed, sorry, Heather, you're next. सैयद मैंने आपको तस्वीरें भेज दी हैं और जो ऑफर उस पर किए हैं वो भी मैंने भेज दिए। जो थी लिस्टेड प्राइस वो 650 की थी और जो उसने एग्री करवाई है वो 570 की है। सेलर फाइनेंस पे होगी। Okay. 570K. What's the down payment? Down payment is 10%, 9 to 10%. So what's the number? एक मिनट, 57,000 is down payment. Okay. Purchase price is 5,70,000. Okay. 570. And listed price is 650. Yes. What's the monthly payment?
or rent? मंथली पेमेंट मैंने कैलकुलेट की इंश्योरेंस प्रॉपर्टी टैक्स और उसका रेंट कैलकुलेट कर लिया Okay, what's the insurance? इंश्योरेंस है 217 Okay, property tax. प्रॉपर्टी टैक्स 639 Where is this property? लॉस एंजलिस में That's why the property tax are so high. Look at the property tax, guys, 639 per month. And if you add that up, that's like $1,000 he's just giving for nothing. That's crazy. What's the rental revenue? 5,000 How much? 5,000 on zero 5,000. It's a single unit, लेकिन मुझे multi-unit. इसमें ये शक है कि जो इसमें दो प्रॉपर्टीज आ रही थी इसका जो है इसके और इसके नाम में सब कुछ सेम है बस थोड़ा सा फर्क लग रहा था मुझे इसकी वजह से वेरीफाई करना पड़ना Okay. Let's go to rental. Rental Zillow estimator. Let me grab the link. Yeah, that's a problem with the. Huh? इसकी जो फोटोज है वो भी 7 है Okay. Okay. So 5,751 बोल रहा है और let's see, 3 bed 2 bath. So हमें bed ढूंढने हैं 3 bed. Again 2 baths, it doesn't really matter कि bathroom 1 भी हो, that's fine. उसके बाद usually जो हमें concern आता है वो square footage का आता है. So let's see square footage यहाँ पर है 6.5 acres, which is about that. I think acres. इसने लिखा नहीं है ऐसे सही से. But yeah, so let's go with Zillow. Square footage 1,800, 5,000, 5,007, 5,008, 5,755, 3 by 3, 3 by 2, 5,7, 3, 3, 5, 8, 3, 3, 5, 8. Let me actually break it even down. Okay, so अगर हम इसके beds देखें, bed जो 3 bed 2 baths, 3 bed 2 baths, right? So this is very close, but the square footage is way off. I'm not sure कि इतना इसका square footage है या नहीं है, but I don't think so. But something wrong with the square footage. 3, 2, 3, 3, 5, 8, 5, 7, which makes sense. 3, 3, 5, 5, lower than this, and it has more baths. Doesn't make sense. 5, 5, 3, 2. So I think it's safe to say somewhere around 5, 4. 3, 3, 3, 3, 5, 5. 3, 3, yeah. 5,000 is low. 5,000 I can tell it's low. We can go up to I guess it's not too low because if you look at here, 4,695. These two 3, 3, 3, 2. 5,033. Yeah, I guess you're right because if these number weren't here, I would go with 5,055. But क्योंकि ये भी recently sold हुए हैं very close to the house, so I think हमको close रहना पड़ेगा. Yeah, so I guess we can go with 5,000. Is a very conservative number, but it's good. हमने rent capex हो गया, management vacancy हो गई, so that's good. Amortization मतलब monthly payment नहीं करी तो और आपको monthly payment निकालनी है, correct? Yes. अभी उसका नंबर ले लिया तो मेरे ख्याल से उसको कॉल कर लेते हैं अगर अभी कर सकते हैं कॉल किसको? seller को? ओनर है असल में एजेंट नहीं है ओनर है या for sale by owner है ये, property owner. तो उसको he was asking in crypto लेकिन उसको कन्विंस किए हैं कि I mean, कैश में उनकी why crypto? Like that just sounds like very fake. Nobody asks money ever. I've never heard anyone ask money in crypto. That sounds very मुझे fake. लगा Let me see his conversation. लेकिन वो कैश पे एग्री हो गए
Yeah, so basically he texted me and I gave him some answers. So that's why you see his answers are kind of like what we tell. Listen, I have another deal. I'll pay you 750K, but I have some condition. I'll give you down payment and 9% interest in 84 months. Thank you, Brazil. We confirm our acceptance. At the time discussed, we are ready to proceed with the next step. The deposit will be paid in crypto. What is this BS? And the thing is, how did he get the owner's email? I don't understand this because owners are not agent, and if you cannot find their email like we find in agent's email, that's interesting. But ये बात let's, भी मेरे को ये पता नहीं कि उसने कैसे फाइंड की. I don't know. Let's call. Let's call. What's his name? Who's been calling? उसका तो उसका नाम क्या नाम होता है? उसने मुझे बताया, नाम है अलीना, नहीं नहीं ALINA. जिससे बात हो रही है यू एड्स, उसने अपना नाम क्या बताया? टिकटॉक का है. हाँ, उसका नाम क्या है? उसने अपना नाम तो नहीं बताया मुझे. जो उसने नाम यूज किया है उसको ईमेल करने के लिए, वो यूज किया है यू एड्स के नाम से. यूएड्स के नाम से. उसने भी, मैं उसको भी पूछ लेता हूँ अगर वो अवेलेबल है अभी. उससे अपना उसका नाम पूछना है मेरे से, मैं उसको कॉल करता हूँ. उसको बगैर नाम बताए भी कर सकते हैं. इट्स ओके. Let's see. So it's kind of strange. It just rings like strange vibes to me. Then how is that possible? But we will try. The issue is, my phone is about to die. Okay, all right, let's call him. The number you are trying to call is busy. Please try again later. 587 387 5686. Let me try again. The number you are trying to call is busy. Please try again later. Yeah, it's strange how this property is listed. I don't know what exactly is going on. The square footage is very wrong. The picture looks okay. So he listed for rent for 2,000. So if you look at here, this house is listed for 2,500, and then he removed the listing next day, and then he put it on sale for today. That's weird. This house is a little bit weird. Why would he list it for 2,500 while Zillow is saying it's about 5,000 rent? Yes, that is strange. But nonetheless, keep it keep it attached with him, because we don't know. There are like, LA is a big market, and people might be buying in crypto or selling in crypto. I'm not sure. This is the first time I'm hearing it, but it could be possible. It could be possible. And I don't think what exactly the way Zillow verify the houses, but I think there is a method where you have to verify your house that you live there. So so it's fine, I guess. We just have to figure out how we do it. Okay. So let's just put it on a follow up. Maybe we'll follow up tomorrow, and tell him that we need to set up a time for tomorrow around this time that we will call.
so his number shouldn't be ringing busy. ओके Make sense? अच्छा मैं आपको एक और नंबर सेंड कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी एड्रेस तो इस पे जो एजेंट है ना ये वही एजेंट है जो कह रहा था मुझे कॉल करो और मुझे कॉल करो ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है और बस यही कह रहा है कि मुझे कॉल करो Sure. अच्छा उसके प्रॉपर्टी की क्या प्राइस है, नंबर पता है आपको? ये वाली प्रॉपर्टी की प्राइस है इसकी 100,000 तकरीबन Okay. Let's run the numbers quickly. I need the 139 आपने ऑफर कितनी दी है? पर वो असल में मुझे कह रहा है मैंने पूछा था पहले कि मुझे ये बताओ वेकेंट है कि नहीं जो जो सवाल पूछने होते हैं सबसे पहले तो वो मुझे कह रहा है कॉल करो उसके बाद जब उसको ईस्टर का बहाना किया कि तुम मुझे ये बता दो तो तुम्हें कॉल करेंगे ऑफर के साथ उसने फिर भी कहा कि मुझे कॉल करो Okay, sure. So purchase price, let's run the numbers our own. Listed price is उसको आपने कैश ऑफर करी है? कैश ऑफर कुछ भी नहीं करा अभी, राइट? क्योंकि वो कह रहा है मुझे कॉल करो तो उसने मानना ही नहीं है Oh my God, 139 days. Mr. James, I don't know what you're doing. You're not doing your job properly. उसका तो उसकी यूट्यूब भी है सर Thank you for calling Holton Wise Commercial and Residential Real Estate. If you are interested in selling your property, press 1 to speak to a representative or send an email to sales@holtonwise.com. That's SALES @HOLTONWISE.com. If you are an investor who is interested in buying an investment property or you have a property you would like Holton Wise to manage for you, press 2 to speak to a representative or send an email to sales@holtonwise.com. That's SALES@HOLTONWISE.com. If you are a real estate agent, lender, appraiser, title company, or anyone else who needs an update on a pending deal with Holton Wise, send an email to closings@holtonwise.com. That's CLOSINGS@holtonwise.com. If you are interested in renting a house, apartment, Oh my or God, are commercial you space kidding? from Holton Wise, press 3 to speak to a representative or send an email to forrent@holtonwise.com. That's FORRENT@HOLTONWISE.com. If you currently rent a property from Holton Wise and you have a maintenance issue, visit the Tenant Support tab at HoltonWise.com. Currently rent a property from Holton Wise and you have any issues other than a maintenance issue, आपके पास इसका नंबर है, इसका डायरेक्ट नंबर? representative or send us an email. आपको सेंड नहीं किया मैंने नहीं, ये तो कंपनी का है ना. That's CUS. Let me try again. इसका नंबर इसने दो नंबर दिए हुए हैं इसके ईमेल में एक ऑफिस Sending. का है और एक जो है डायरेक्ट है इसने कहा था कि मुझे वहीं से कांटेक्ट करो वहीं से नंबर लेके कांटेक्ट में कर दिया सेंड मैंने आपको Yeah, I think let me do office something. Maybe he's not working or something. That's why he's going to his office. Hi. Hey, is this James? This is Steve. This is Steve. Okay, I was looking to speak to James on his property on Bihar World. Yeah, just a second. 3514 Fairwell. 3514, correct? Yeah.
What was your name? Syed. SIAD? SYED. SYED? You got it. Yeah, I got a video tour I'll shoot over to you. What's your Sure. email address? It's SYED BUKHARI 709 @gmail. Let's read that back. SYED, B is in Bob, U is in umbrella, T is in Tom, H is in Harry, A is in Apple, R is in Robert, I is in Igloo, 709 @gmail. You got it. All right, yeah, I'll send you over this video tour. You'll see James, he's in the video. Basically, that's all the info that we have on the property. If you want to put your offer in, his email will be in that video tour. Okay. Do you have investment properties already? Is this you getting started? No, we have investment property already. I think one of my acquisition person was chatting to him on the email. So I was kind of, he wanted us to call him and talk to him directly. So I wanted to just call him and kind of speak to him. Is he not available? I cannot speak to him. Yeah, James definitely didn't tell you that. I guarantee you that. He probably wanted you to call me. But yeah, Interesting. James communicates via email. His email's on there. So if you do want to put your offer in, like I said, his email's in there. You can shoot him over your offer. But what we have in the video tour is basically all the information that we have to provide. If you are looking for investment properties, and if you're looking for a team to kind of walk you through these neighborhoods, that is a service that we provide as well. So Yeah, does that work out for you? Yeah, I do have a couple more properties in the north of this one. So we kind of wanted to pick up this one as well. Do you know if the seller would be open to sort of some sort of seller financing? For this one, no. But Okay. if you are looking for seller financing, we do have a lot of options we can provide to you. If Okay. you just want direct access to the market, we sell feeds that you'll see in the email that I shoot over to you. It'll say MLS access, and then Okay. you'll see seller finance feeds for all the markets here in Ohio, Cleveland, Akron, Canton. We got them all, and then each feed $99. It's just a one-time. It's not like a subscription, like monthly, yearly thing. Right. It's just a one-time setup fee. Anytime these properties get added to the market that are allowing seller financing, they'll get shot over to you directly. Okay. And you guys basically ask the sellers before kind of going on the market that if they're open to those type of structures? So yeah, this is the direct MLS database. So they're not sellers that we're working with. Okay. This is just everybody. Right. Okay. Sounds good. Yeah, shoot over the email. I'll look into it and go from there. Yeah. Check that out. Give me a call if you have questions about our services. But if you're putting in an offer on this one, like I said, James's contact info is in that video form. Okay. Sounds good. Thank you so much. Take care. Bye-bye. So the ones that he said कि मैं email करता हूँ $99 that's not useful because वो इसका मतलब है कि वो property किसी और agents के under है और हम जो है as a ये हमारे buyers agent बनेंगे, ठीक है, और फिर हमारे लिए वो लेके आएंगे, which is not good thing. We're not looking for buyers agent because then it's gonna eat into the profits. तो इसको फिर मैं कुछ भी ना करूँ उसका इसको I don't know, उसको दोबारा email करो, उसको बोलो कि मैंने बात करी है किसी से but it wasn't James, and he sent me an email with the list of the property, and he told me that इसको आप ना cash offer दे दें, इसकी property enough कम, इसकी price enough है कि आप उसको cash offer दे दें. I don't know what it looks like from inside, मगर आप उसको बोलें कि I talked to someone and he sent me the video of you and things like that. और उसको बोलो कि I will do the cash offer for 70,000 for this one, right? और बोला ये कि depending on what's the condition of the house inside. I guess उस video में होगा. So it's fine. Yeah, but just go with 70,000. Once we get the video, we'll see if it's good enough or no. वीडियो वगैरह है इसने प्रोवाइड किया हुआ सब कुछ अच्छा, इसने दिया हुआ आपको video? So is it a link or YouTube video or what it is? YouTube वीडियोस के बाद
यूट्यूब वीडियो के साथ एक ड्राइव का लिंक है. Okay. आई थिंक सो ड्राइव का लिंक था. Send me the link of the video. Send me the link of the YouTube video. आई थिंक मुझे शायद ड्राइव का लिंक भी मिला था, लेकिन We are one of the only social media I agencies don't remember कि शायद मिला था. बाकी ये वीडियो है, इसमें मैंने आपको देर पहले भेजी थी एक तस्वीर जो इस वीडियो से निकाली थी मैंने. उसमें जो मेन डिटेल थी इस प्रॉपर्टी की, ये जो येलो है, येलो बॉक्स में. So what is और this? ये है Is भी this तकरीबन a guy that एक does? साल पहले की है. Interesting. What is this whole thing? right? They're the number one resource for all of your listings. आई थिंक ये यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं उन्हें और फिर पोस्ट करके जो बायर है वो लेके आते हैं. Because I'm going to show you all of the footage that we have, all the uncensored, censored footage of it. Not going to flake is low, right? Saeed, the call is going to end in 4 minutes. Sure. Yeah, I mean, it looks fine. I think it's not that bad. You can start with 0.65 as an offer, and then that's it. Go from 0.65. I think that would be better. Okay. And we can go from there. Okay. All right. I'll move on to next person. मुझे कॉल के बारे में वो क्या बताना है? उसको बस यही बोले जो मेरी बात हुई है किसी से, Cousin James, and just give him a cash offer. Okay. All right. ठीक है. Thank you. We'll get to the next person. I think Eamon is here. Eamon, so far, I'll give you a quick update on your deal. So basically, what happened is that agent को नहीं पता कि Sarah Finance करते कैसे हैं, but agent told me कि वो लोग 220 की पेमेंट ले लेंगे. जो हमने पेमेंट बताई ना, उसने बोला कि हाँ वो ले लेंगे. बट मैंने पूछा कि भाई ऐसे आप कैसे ले लोगे, क्योंकि तीनों घर पे तो मॉर्गेज है और एक घर का मॉर्गेज 700 पे, तो टोटल बनेगा कुछ 3000 समथिंग, और ये लोग लेंगे 120 की पेमेंट. तो इट डजंट मेक सेंस. सो आई आस्क हिम कि आप जाओ ओनर से बात करो. वो बोलता मुझे नहीं पता. मैं बोला भाई जाके ओनर से बात करो, ओनर से पूछो कि वो कितनी पेमेंट लेंगे. तो फिर उसने बोला ठीक है मैं जाके ओनर से पूछता हूँ. मैंने ये पूछा था कि मंथली क्या पेमेंट है चारों घर पे, वो भी बताओ. तो ही सेड विल डू. Let me actually text him, ask update. Hey Justin, any update from the seller? Okay, let's see if he responds, and we'll go from there. Okay, so the next person that we need to chat, I guess no one. Guys, where's the deal? Nobody has the deal? Okay, let's make our own some deals. Okay, so today I wanted to call some of the numbers on the multi-unit, like the big boys. So एक मिनट रहेगी. sure, I'll call. I'll make. Okay, so we have a new meeting link. So everyone please join that link. We'll make some calls today. I'll answer TikTok questions. Raj joined. Hi Raj, how's it going? You're learning about real estate. It's exactly what we're doing, how you can make money from real estate. Basically how we are doing is that somebody sell the property, somebody buy the property, we are the middle person. We help the seller to agree on the terms and we sell it to the investor with a little bit more money. That's all it is. So we are intermediary between two parties.
And our एक commission. सवाल था मेरा। Yes, go ahead. सही पे एक ना एजेंट है, वो कह रही है कि पहले घर देखो फिर हम डील करेंगे। मैंने उसको ऑफर भेजी है, उसने पहले ऑफर देखी है, उससे पहले तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद वो कह रही है कि पहले घर आओगे तो फिर देखेंगे। Okay, so आपको basically I think हमने basically उसको बोलना ये है कि we invest all across the states, ठीक है। अगर हम हर प्रॉपर्टी को देखने चलेगा तो it's going to cost us hundreds and thousands of dollars per year, okay? So we don't do that. Unless the offer is accepted, I will not come in and I will never step into the property anyways. My contractor, then I'm going to hire locally, will step in, okay? For me to hire a contractor, it's going to cost me about $800, $900. If you're able to pay that $800, $900, I'll walk the property. But if you're not, you have to get the offer accepted. Once it's accepted, I will come in and I will send my contractor in. ठीक है। एजेंट वो इस वजह से बोलते हैं ताकि वो आपको देखें कितने सीरियस है। तो आप उसको बोलो कि भाई I'm not gonna come in, I'm out of state investor, मैं आ नहीं सकता प्रॉपर्टी में, ना मैं कभी आऊँगा। मैंने कोई भी प्रॉपर्टी खुद जाके देखी नहीं है, ठीक है। मैं बगैर देखे बाय करता हूँ। आई हैव local people, like local contractors that will go and send me the report, and I make decision based on that. I don't need to walk in the property, I don't need to see the property. That's okay, but for me to do that, it's going to cost me money. I will not put my money until we are under contract or until the offer is accepted, ठीक है। वो बोलते इस वजह से ताकि जो है कि कोई सीरियस बंदा आए, बट इट्स इम्पॉसिबल फॉर समवन को चेक। अगर कोई बराबर में ही रह रहा है तो ही जा सकता है, वरना नहीं। सही, आई वांट यू टू कॉल टॉनी, जिसकी हमने कल ऑफर बनाई थी। What happened with him? Why are we calling? Did he agree with the pricing? उसने अभी तक कोई रिप्लाई तो नहीं किया मुझे, जिसमें हमने 60,000 की वो डाउन पेमेंट डिमांड कर रही थी, तो हमने वो दूसरा कैलकुलेटर पे नंबर्स रन किए थे। इवन वो तो मेक सेंस तब भी नहीं कर रही थी ना। मैंने आपको बताया था कि इसके कैश ऑफर जाएगी सिर्फ। उसका रेंट का मसला, हाँ उसका रेंट का मसला था ना, काफ़ी लो था। रेंट का मसला तो नहीं था, लेकिन उस पे वो प्राइस का मसला, डाउन पेमेंट का मसला था। अगर हम ज़्यादा करते हैं तो हमें नुकसान होगा। हाँ तो वही ना, अगर सेकंड ऑप्शन में आपका रेंट ज़्यादा होना चाहिए, राइट। वो इस वजह से क्योंकि हम 2 लोन ले रहे हैं, हमारे पास 2 इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है। तो अगर वो हम ज़्यादा तो डाउन पेमेंट ला सकते हैं, मगर जो पेमेंट्स होती हैं वो और ज़्यादा कम हो जाएंगी, राइट। तो इस वजह से रेंट हमें डिसेंट होना चाहिए ताकि पेमेंट हमारी उतनी हो। तो इसको कॉल करें कि नहीं? इसको आई मीन यू हैव टू ब्रिंग हिम हर डाउन फॉर द बेस फॉर द डाउन पेमेंट। अगर वो नीचे आती है तो फिर दोनों स्ट्रेटजी लग सकती हैं, राइट। वरना तो हम बैंक के पास जाके बैंक से लेने लो, ज़रूरत ही नहीं है हमें इससे सेल्फ फाइनेंस की, राइट। सेल्फ फाइनेंस का मकसद ही ये होता है कि आपने ओनर को बोलना है कि आपने बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसको बीट करना होता है। बीट कैसे करते हैं? बेहतर इंटरेस्ट रेट एक तरफ बीट हो गया, स्मॉलर डाउन पेमेंट दूसरी तरफ बीट हो गया, दैट्स इट। और उन दोनों के चक्कर में हम आपको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, घर के हम 10% ज़्यादा दे रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो टेक्निकली आपको मिल गया 10%, जो कि बैंक से बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और जो डाउन पेमेंट होती है 20% से हम 10% पे ले आए, प्लस हम बाकी क्लोजिंग कॉस्ट भी पे कर रहे हैं। तो अभी सब नेगोशिएशन ट्रिक्स यूज़ करके उसको बताओ कि आई विल पे द क्लोजिंग कॉस्ट, उसको बोलो, और उसको बोलो कि डाउन पेमेंट पे नीचे आओ। उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया मुझे। तो आप इट्स ओके, ये ज़रूरी नहीं कि हर 2 दिन रिप्लाई आपको मिल जाए, आप उसको फॉलो पे रखो, दैट्स ओके। देयर इज़ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर प्रॉपर्टीज मैन। अगर आप लोग एक प्रॉपर्टी पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप यू लूजिंग मनी। हमको नहीं रिप्लाई है, ठीक है, इसको आपने CRM में डाला, फॉलो पे रखा, मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देयर इज थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ एक सिटी में, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिटीज़ हैं US में। तो आपने इस पे फोकस नहीं करना कि यार वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उसको कॉल करते नहीं। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी एंड यू बोथ, राइट।
तो आपने नहीं रिप्लाई करता कोई बात नहीं, उसको आपकी ज़रूरत है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने ये बात याद रख, क्योंकि यहाँ पे हम उसके लिए एक डील स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसके घर सेल नहीं हो रहा था, तो उसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है बनस्बती कि हमें उसकी ज़रूरत है। तो आपने ध्यान में रखना ये बात। ओके अच्छा, वो एक जो हमारा एक पोर्टफोलियो था 11 प्रॉपर्टीज का, जी। उसको 1 महीने बाद मैं फिर उसको फॉलो करूँ या हाँ हफ्ते बाद, नहीं, जो लाइक आप इसको फॉलो अप तो समझ लो विद इन अ वीक करो, बट नॉट ऑन द प्रॉपर्टी, जस्ट हेलो हाई करने के लिए, ताकि आपका कनेक्शन बढ़े। और इससे पूछ लो कि भाई कोई और प्रॉपर्टी तो नहीं है आपके पास जो मैं देख सकता हूँ, उससे की बात। और ऑन द बैक ऑफ द माइंड ये बात रखना कि हमें बात उसको वही वाली प्रॉपर्टी से करनी है। मतलब एट द एंड। हाँ एट द एंड वही करनी है ज़ाहिर है, बट उसके पास अगर और भी प्रॉपर्टी है तो हम उसको इंटरटेन करते हैं, हम उसको देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको मना कर देंगे। ओके। Let me put the TikTok on the charger. Worst situation here. तो Okay, I need to figure out my phone for the TikTok because it's running out of the battery. Okay, so let's call this property. This is a multi-unit property, 935,214 days on market, right? That tells you like it's not selling, nobody's buying it. Most likely the cap rate is the issue. ठीक है, कैप रेट हमारे पास 2.28% है, 5.28%। मैंने आपको बताया था अगर कैप रेट हाई है तो मोस्ट लाइकली इशू यहाँ पे ये है कि सेलर जो है आपका वो प्राइस कम नहीं कर रहा, राइट। यही बहुत बड़ा इशू होता है कि सेलर प्राइस नहीं कम कर रहा और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है और कैप रेट है वो बन नहीं रहा सही। ठीक है, अगर कैप रेट सही नहीं बन रहा तो नोबडी इज़ गोना बाय इट ऑफ कोर्स। Okay. Give me 1 second, guys. You guys gotta figure this out somehow. Okay, whatever. I'll just do the TikTok like this. Okay. Yeah, so the discussion here हमको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि इसका कैप रेट कितना है और जिस कैप रेट की वजह से वो सेल नहीं हो रही है, राइट। ऑफ कोर्स ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 100 एंड समथिंग डेज़ की पड़ी हुई है, इसका मतलब 200 डेज़ की, ऑलमोस्ट अ ईयर। ठीक है, उसको कोई बाय नहीं कर रहा। सो इट्स अ गुड प्रॉपर्टी। हम इस पर ऑफ़र देते हैं और हम इसको इससे बात करते हैं। सो इसका जो I think the problem here is that I have to log in here. Shoot. Jason Cope को हम वैसे भी सर्च कर सकते हैं। So Mr. Colton. Mr. Colton is the guy. Colton Tab. Colton Tab. Yeah. So let's call Colton and see. So अगर आप कॉल नहीं कर रहे और आप उसको ईमेल कर रहे हैं तो सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। जिस तरह हम बाकी सबकी ईमेल निकाल रहे हैं इसी तरह हम उसका नंबर निकाल रहे हैं। बट अगर आप उसको साइन अप कर लो, इट्स अ फ्री साइन अप, इट्स नॉट गोना कॉस्ट यू एनीथिंग। ठीक है, आपको कोई कॉस्ट नहीं होगी, बट आपको नंबर मिल जाएगा। पर अगर ईमेल निकालनी है और वहाँ से निकालनी है तो आपको ज़ाहिर पे करना पड़ेगा, बट आप उसका ईमेल सर्च कर लो तो इट्स फाइन टू।
interesting. It's not even going on call. It's not even ringing, guys. I don't know what's going on. No idea what's going on. Justin said I spoke with him this morning and he said he was going to get it for me. I haven't heard back, but I will reach out again now. I'll send it over ASAP. Sounds good. Thanks for the update, Justin. Okay. I don't know why it's not even going on call. Maybe there's an issue with my internet. It's 247. 469. It's preparing. Yeah, I don't know if my this app has issues. It just says preparing, and it's not calling. Mr. Colton, get away for free. Let me try something else. Okay. 700,000, 650,000, 4 units, multifamily, 645 per unit, Mississippi. Let's see if Mississippi property is good. What's the cap rate? Cap rate is 6.23%. A good start. Definitely a good start. Good start. The property price looks to be decent. अच्छा इसमें आप ना जब आप इस उसमें आएंगे ना तो आप इसमें LOI यहाँ से भी सेंड कर सकते हैं. यहाँ पे ऑप्शन आएगा सबमिट LOI का. ठीक है, तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे. अगर आप लॉग इन ऑलरेडी तो वो आपको 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, आपकी कंपनी के नाम पूछेगा, चीज़ें पूछेगा और वो सबमिट कर देगा. तो आप सिर्फ इस ऐप से भी उसको आप सबमिट कर सकते हैं विदाउट एन इश्यू. Maybe I should just log in. I don't change the password. Let's do it later. Okay, so there's 3-4 multifamily. Car looks to be in a decent shape. Bad pictures though. Bad pictures. Okay, so this house could be good. Let me see one more. Then I'll call them together. $4 million property, 144 units, 33,000 per unit. That's a good property because it has 100 plus units. I'm guessing the cap rate would be decent as well. The occupancy is about 68%, right? मैंने आपको बताया था इतने सारे 100 के करीब घर हैं ये पूरी कम्युनिटी में. अगर वो सारे बेच रहा है तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हर घर में लोग हों. ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर घर में 98%, 90% या 100% ऑक्यूपेंसी हो. सो दैट्स ओके आपको. बट अब जो 68 के बाद जितनी भी पर्सन खाली पड़े हुए ना वो टेक्निकली फ्री मनी है. ठीक है, और इसी वजह से इसने कैप रेट मेंशन नहीं किया, राइट? वो छुपा रहा कैप रेट इसी वजह से क्योंकि ओनली 68% ऑक्यूपेंसी है. उस पर अगर वो कैप रेट लगाता है
तो बहुत कम होगी प्राइस की इसकी, मतलब बहुत लो कैप रेट होगा. सो wouldn't make sense for a cap rate. So that's why he's hiding it before for us. But जब आपसे बात करोगे वो आपको पूरा T2 देगा, जो कि टेनेंट की 12 महीने की प्रोग्रेस होती है वो देगा. तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने की प्रॉपर्टी पानी में. ठीक है. Occupancy is to 2 units. That could be good property to reach out. Helene Apartments, 1 million exactly. Let's see what's the cap rate. 14 units, pro forma cap rate. Okay, so this is the other thing, guys, you have to keep in mind. जहाँ पे भी आप pro forma cap rate देखें ना, pro forma मतलब है कि आपकी इमेजिनेशन का नंबर, इससे रियलिटी का कोई काम नहीं होता, और हम कभी भी pro forma के नंबर नहीं लेते. ठीक है. परफॉर्मा वो नंबर होता है कि इन एन आइडियल सिचुएशन जब सारे प्रॉपर्टीज़ रेंट होती हैं या सारी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ जाएंगी या 89% चढ़ जाएंगी, तो उन नंबर को कैलकुलेट करके परफॉर्मा बनाया जाता है, राइट. या 3 साल में रेंट बढ़ेगा तो आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो उसको परफॉर्मा रेट्स बोलते हैं. तो परफॉर्मा रेट्स आपने उसका कुछ भी नहीं करना है, आपने उसको एक आंखों से सुनना है और उसको दिमाग से निकाल देना, क्योंकि ये सिर्फ एक टैक्टिक्स होती है दिखाने के लिए कि भाई 7.252 परफॉर्मा रेट है. आपने उससे पूछना है व्हाट इज़ द गोइंग कैप रेट. आई डोंट वांट द परफॉर्मा. व्हाट इज़ द गोइंग, व्हाट इज़ द करंट, व्हाट इज़ द कैप रेट दैट यू आर सेलिंग राइट नाउ. ओके, नॉट द परफॉर्मा. ठीक है. अब वो आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, oh there is couple units that needs to be fixed, there is one unit that's not rented, blah blah blah. आपने बोला it doesn't matter. For me, I'm gonna take numbers on what you're making right now, not what you will make in future when the things are in order. Okay? तो आपने इसको इसी तरह बोलना है कि it doesn't matter to me. I have to get the numbers that you are currently seeing. Right? You can see performer income, performer operating expenses, performer net operating income. This is just all BS. Let's just say वो बोलता है कि नहीं पूरी प्रॉपर्टी में कोई भी नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी खाली है, तो फिर हम उस प्रॉपर्टी को लेंगे नहीं, राइट. क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी में कोई प्रॉपर्टी का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है, राइट. अब ये प्रॉपर्टी मे भी इस जगह बनी हो, हमको नहीं पता, जिस जगह पे बहुत ज़्यादा मसले हैं, राइट. या कोई एक आई डोंट नो कोई बंदा उसमें मर गया था, उसकी रूस में है, जो भी एक कहानी होती है हर सिटीज़ में, कुछ भी कहानी हो सकती है, राइट. तो हम उस प्रॉपर्टी को नहीं लेंगे और उसको एंटरटेन नहीं करेंगे अगर वो इस तरह का पूरी खाली है, राइट. अगर सेलर को ज़्यादा पैसे चाहिए बिल्कुल मांगे, मगर सारी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा दें. सारी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा के प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और फिर जितने पैसे मांगे सब देंगे इसको, राइट. क्योंकि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, एक आपके सामने दिख रही चीज़ें, प्रॉपर सबके पास उसका रिकॉर्ड है, वहाँ पर रेंटर रह रहा है, नो इशू देयर. ओके. तो कभी भी आपने परफॉर्मा पे नोटिस नहीं करना, हमेशा आपने फोकस अपने उस पर करना है कि अभी क्या चल रहा है. सर, एजेंट ने मॉर्गेज की एग्जैक्ट अमाउंट क्या बताई है, और मॉर्गेज की डिटेल मिलने के बाद क्या ये डील हमारे लिए भी अभी भी वाइबल ग्रीन है, या हमें अपनी ऑफ़र रिवाइज करनी चाहिए? नहीं, आई थिंक ऑफ़र में हमने सब कुछ दे दिया है जो परफेक्ट है, और ऑफ़र उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया. मसला सिर्फ ये आ रहा है कि let me actually see. I think he sent me the email. Sent. Yeah, I think he just sent me the email. What is going on? My phone is acting up so bad. Yeah, he sent me the email. Okay, let's see what he said.
showing. Okay, so he sent 4 statements, which is good. Okay, so mortgage statement, guys, if anyone is wondering what that looks like, um, it looks like this. ठीक है, बैंक का नाम होगा, जिससे भी लोन लिया होगा, स्टेटमेंट होगी, पेमेंट ड्यू डेट होगी कि कब पेमेंट है, और पेमेंट अमाउंट होगी. ठीक है, उसने लोन नंबर हटा दिया है, डजंट मैटर, हमारे लिए काम का नहीं है. हमारे लिए काम के लिए ये चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ दिख रही हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू. ठीक है, प्रिंसिपल, हाउ मच ऑफ अ प्रिंसिपल ही इज पेइंग, इंटरेस्ट $709 इंटरेस्ट जा रहा है उसका मंथली में. एस्क्रो की जा रही है, इन टैक्सेस एंड इंश्योरेंस जा रही है 279. तो मंथली पेमेंट इस प्रॉपर्टी पे इसकी बन रही है $1078. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आप घर लेते हैं बैंक से, तो बैंक आपको पिछले स्टार्टिंग के 6-7 साल इंटरेस्ट की पेमेंट ज़्यादा लेता है आपसे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है प्रॉपर्टी पे $709. ठीक है, और प्रिंसिपल जो आपका एक्चुअल बैलेंस है, जो घर की एक्चुअल कॉस्ट थी, उसके पैसे 90 हैं. राइट, अब आप जितने पैसे कम पे कर रहे हैं बैंक को, राइट, उतना ही इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है. राइट, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा एम्orटाइजेशन बढ़ रही है. तो अगर मैं 90 की जगह 1000 पे कर रहा हूँ, तो ये इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट बेस होता है जितना बैलेंस आपका होता है घर पे. ठीक है, तो आप बैलेंस ज़्यादा पे करो तो इंटरेस्ट भी कम होगा. मगर बैंक चला के, बैंक को पता है कि पैसे हमने कैसे बनाने हैं, तो बैंक आपको बोलता है ठीक है मैं आपको घर तो दे दूंगा, मगर पहले 5-6-7 साल जो है मैं आपसे बहुत इतनी सी प्रिंसिपल पेमेंट लूँगा, ताकि वो अपना सारा इंटरेस्ट निकालता है, इतनी सारी कॉस्ट. तो समझो 700 की इंटरेस्ट है, 90 का घर है, लाइक प्रॉब्ली लाइक 2000-3000% लॉस है एज अ पर्सन. राइट, बट अगर आपका रेंटर 2000 पे कर रहा है और आपकी टोटल अमाउंट बन रही है 1000, आई डोंट हैव अ इशू विद दिस. राइट, इस वजह से इन्वेस्टर बैंक के पास भी जाते हैं कि अगर मुझे रेंटर पे ही 2000 कर रहा है और मुझे 1000 बैंक को देना है, इट्स ओके, आई कैन डू दिस, आई डोंट हैव अ इशू विद दिस. राइट, तो इस वजह से ओके होता है. अच्छा, तो बैंक स्टेटमेंट कुछ ऐसी दिखती है, आपने प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकाल के ये सब करना है. ठीक है, जब भी हम मॉर्गेज टेक ओवर करते हैं, मतलब अब जैसे ये मॉर्गेज चल रहा है इस बंदे का. ठीक है, अब इस बंदे का जो ये मॉर्गेज चल रहा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है बैंक से. इसको नहीं चेंज करेंगे, हम इसको हटा के खुद आ जाएंगे. ठीक है, बट हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है ये. ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट इसका 7% है, जो कि क्वाइट हाई. 7% इंटरेस्ट रेट पे हम नहीं चाहेंगे कि हम इसकी जगह पे आएँ और इसका मॉर्गेज ले लें. राइट, बट अगर नंबर मेक सेंस कर रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं. राइट, तो इसकी एक प्रॉपर्टी पे है 1000 का मॉर्गेज, तो इसका मतलब 1000 हमें कम से कम जो कैलकुलेशन में $1000 को देना है. ठीक है, let's see the other property, other 1 2 3 4. ठीक है, तो ये 4 properties in under question right now. All four properties has 1000, 1426, 1100 and 1052. Okay, so how this deal is gonna work, because he has a he has a monthly payment, we have to make sure that के property की जो हम जैसे उसको ऑफर देंगे ना यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड हाइब्रिड डील. ठीक है, जो अब हम जो देखने चाह रहे हैं वो इस हाइब्रिड डील में जाएंगे, तो ये उस टाइप की प्रॉपर्टी बनेगी फॉर अस. ठीक है, बट लेट मी पुल आउट हिज द नंबर्स. What's his name? Justin. Yeah, Justin Ayan portfolio. Amen. Okay. I have to close all these because this I hate doing that. Okay. So हमने जो उसको ऑफर दी थी 1200, उस ऑफर पे we are doing great. ठीक है, अब टेक्निकली क्योंकि मिस्टर सेलर के पास मॉर्गेज है,
तो ये ऑफ़र नहीं बन सकती। और अगर हम उसको $1000 देंगे तो वो सिर्फ एक ही घर की पे कर पाएगा, बाकी के पैसे कैसे वो जेब से पे करेगा? इट डजंट मेक सेंस। तो टेक्निकली हमको बायर को, जो सेलर है, सॉरी, सेलर को इतने पैसे देने हैं कि उसकी जेब से कोई पैसे ना जाए, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी हमारी बन जाए, ठीक है। तो उस लिए हमें अपनी जो पेमेंट्स है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्वाइट अ बिट। तो लेट्स कैलकुलेट व्हाट द पेमेंट्स कुड लुक लाइक। अब मैंने इसे बताया था हम बैंक को नहीं छेड़ सकते इसमें, ठीक है। 1079 प्लस, तो जितना बैंक को दे रहे हैं उतना ही देना है। 1027 प्लस 1138 प्लस और 1053 okay, so $4,297, okay। इतने पैसे बैंक को देने हैं ये तीनों घर ओन करने के लिए, ठीक है। और क्योंकि हम सिर्फ इसकी पोजीशन ले रहे हैं तो हमें ये देखना है कि इसकी इक्विटी कितनी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग कितने पैसे इसके रहते हैं, तो $113,000। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 113, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 113, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 113। तो इसका मतलब है कि इसने सारी प्रॉपर्टी जो है 113 पे लिए, ऑलमोस्ट। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इसका मॉर्गेज चल रहा है, बट it should have amount due 1,700 right here. Mortgage payment, insurance payment, mortgage. So इस पे हमने करना ये कि इस पे सेलर फाइनेंस का हाइब्रिड सोल्यूशन हम चलाएंगे। पूरा नॉर्मल सेलर फाइनेंस नहीं चल सकता, राइट। तो इसको सेलर फाइनेंस हटा के हम जाएंगे हाइब्रिड पे, और फिर कैलकुलेशन हमारी हाइब्रिड पे होगी। उसका मतलब ये है कि हम इसको मिस्टर सेलर ने जितने पैसे पे किए हुए हैं घर में प्रॉपर्टी के, उसको उसकी पेमेंट्स भी देंगे, प्लस बैंक का भी मॉर्गेज पे करेंगे, तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं बस जस्ट मॉर्गेज टेक ओवर की बात कर रहा हूँ, जो कि सब 2 होती है, उसमें जस्ट हम उसको उसकी पोजीशन टेक ओवर कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। उसकी पोजीशन जितनी भी है उसको टेक ओवर कर लेंगे। बट द थिंग हियर इज़, द इशू हियर इज़ दैट हमारे पास जो लोन है वो इतना हाई है कि हमें पास पैसे नहीं बचेंगे सेलर को देने के लिए। तो हम सेलर को ये बोलेंगे कि मिस्टर सेलर, हमने जो पहले ऑफ़र दी थी आपको, वो ऑफ़र थी बेस्ड ऑन द नंबर्स कि आपका कोई भी मॉर्गेज नहीं है, ठीक है। अब आपका अगर मॉर्गेज आ रहा है तो हम आपसे घर लेते हैं, चारों घर लेके हम आपके बैंक को पे करते जाएंगे आपके बिहाफ पे, ठीक है। बट हम आपको कुछ भी नहीं पे करेंगे एज अ मंथली पेमेंट, ठीक है। और जो पेमेंट्स होंगी वो बैंक को जाएंगी। हम आपको डाउन पेमेंट दे सकते हैं, और जो भी डाउन पेमेंट देंगे हम आपसे चारों घर ले सकते हैं, राइट। क्योंकि टेक्निकली मिस्टर सेलर की कोई इक्विटी है ही नहीं घर में, वेरी वेरी लो है या नथिंग। मे बी इसने 2-3 पेमेंट्स करी होंगी, 3-4 पेमेंट्स करी होंगी, दैट्स इट, बट उसने ज़्यादा पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। तो इस वजह से हम हमेशा इसको कैलकुलेट किया हमने, हमारे पास आया 4297। तो इस नंबर को हमें लाजमी पेमेंट्स में लेके आना है इस जगह पे, राइट, विच विल बी हार्ड, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डू दैट, ठीक है। So let's do seller finance for now, and let's try to make sense of this number. Let's do 20 years. I don't know. 20 years, and we have to go to लेकिन G. जो माइकल गेलिश है वो कह रहा है कि इट शुड बी 40% डाउन पेमेंट। तो उसको मैं क्या कहूँ कि हम इन्वेस्टमेंट कंपनी है। Um, um,
उसको आप 40% डाउन पेमेंट बोल रहा है, तो उसको बोलो कि मैं बैंक के पास क्यों नहीं चले जाता अगर मुझे आपके पास आना तो. ओके. Okay. ऑलराइट. सो 400,000 की आप पेमेंट कर रहे हैं और इतनी प्राइस है, बट वी स्टिल नीड क्वाइट अ बिट ऑफ अ लोन. This probably needs to speak to a bank on this, because mortgage payment, I don't know. Let me ask Justin. I checked the mortgage statement. Looks like the total monthly payment for the properties is $4,297, give or take. Have you confirmed with the Mr. Seller how much is he going to pay for the mortgage monthly? Seller, that how much is he going to pay for the mortgage? Okay. Yeah, so this is something we have to speak to the seller and see where he's at, because this is not as easy as seller finance. It's a little bit more complex. It has two components. It has a bank component, and then it has a Mr. Seller. So Eamon, as soon as I have something in return, I will let you know. For now, we're just gonna discuss things with him, terms. So maybe we will tell them, look, the best we can do is about 3,000, and you, Mr. Seller, still have to put in about $1,000 in the property, and then we keep doing that for an amount of 8 years, and then we will refinance the property and get out of it. Okay, or 10 years, I guess, for in this case. But the better deal would be for Mr. Seller and for us, would be if we are able to cover the mortgage. Okay, if we can cover the mortgage, then Mr. Seller doesn't have to worry about anything. He'll just do whatever he's doing, and we are paying mortgage, and we are making this property ours for 10 years, and then we can refinance it, give him the money back, and then get out of the property. Okay, so that's probably where we at right now. Let me see if there's questions. Eamon said, can you give me a recap of checking these properties? Yes, I can give you a quick rundown of how to look into the Crexi commercial properties. Again, so you will open this. This is how it's gonna look like. You're gonna go to the sale, and you can put a location, but I'll just go all over the states to get all properties for sale. All types, we don't go with all types. हम all types पे नहीं जाएंगे, हम multi family पे click करेंगे. ठीक है, हमें business नहीं चाहिए, हमें industry नहीं चाहिए, हमें और चीज़ें senior livings नहीं चाहिए फिलहाल के लिए. ठीक है. Price, again I mentioned any price works, because seller finance is seller finance, doesn't matter. Cap rate, again cap rate जो भी लिखा हुआ हो, हमें उससे पता चलता है कि पानी प्रॉपर्टी कितने पानी में, राइट. अगर वो डूब रही है तो कैप रेट लो होगा, अगर वो ठीक ठाक कमा रही है तो कैप रेट हाई होगा. ओके, बट इट डज़ नॉट मीन कि आप उसको रीच आउट नहीं करेंगे. इसका बस मकसद ये होता है कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि चल क्या रहा है प्रॉपर्टी में, राइट. बट यू विल क्रिएट योर ओन कैप रेट. अगर मैं आता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भाई मैं आपको 3 मिलियन की प्रॉपर्टी पे ख़रीदूँगा और 3 मिलियन कैश दूंगा, अगर वो लेता है तो हमने कैप रेट को पता नहीं कितना हाई कर दिया, राइट, क्योंकि रेंट तो उतना ही रहेगा. तो टेक्निकली एनी कैप रेट इज़ फाइन. ऑल फिल्टर्स हियर, मैंने आपको बताया था उधर ज़िलों में भी आप सेलर फाइनेंस लिख सकते हैं. तो यहाँ पे भी सेलर फाइनेंस के आप लिख कर आप एक कीवर्ड ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलर फाइनेंस लिख दें तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेलर फाइनेंसिंग अलाउ कर रही है. ठीक है, तो आप उस पर ऑफ़र करो, बट मेक श्योर कि आप सिर्फ उन्हीं पे नहीं पड़े हुए हो, क्योंकि जिस तरह आपने सेल्फ फाइनेंस वाली प्रॉपर्टी ढूंढी है उस तरह जो और भी लोग ढूंढ रहे होंगे, राइट. तो अगर आप जो एक नॉर्मल जिस पे सेल्फ फाइनेंस नहीं लिखा हुआ और उस पर ऑफर देते हो वो एक्सेप्ट होती है, तो मोर लाइकली वो ज़्यादा वर्क करेगी बनस्बत के सेल्फ फाइनेंस वाली, राइट. तो आपने कोशिश करनी है, आपने दोनों पे जाना है. अगर सेल्फ फाइनेंस लिखना है तो लिख दो, इट्स अ शॉर्टकट, बट आई डोंट डू इट. ओके,
ताकि I'm open to all the properties. कोई भी अच्छी property so I'll go with that. Okay. Okay, so it's showing me about 24,000 results. Okay, that's way too much. कि मैं उसको handle कर पाऊँ. So I guess what we can do is that we can do a filter of multi units. What we can do, I think we can do. I guess technically we can use all of them, but maybe in multi-families, let's delete the RV parks, student apartment building. Let's delete the student housing, and let's make the cap rate higher. It's fine, but let's make the cap rate to at least 2% minimum cap rate. Okay, let's go with at least 2%. So from 22,000 we came down to 5,000. Okay, it's okay, it's a good start. Okay, so whenever you see something like this in Crexi where it's like it's a plus sign, there's like 3 different properties on it, it means automatically that it's a portfolio. Okay, नीचे लिखा हुआ भी है some city portfolio. Okay, so that means he has many properties, he's selling all of them at once. Okay, why he's selling? He may be retiring, he may be finishing his career for real estate, maybe it's too much for him to handle, maybe he just wants the cash, could be many reasons. Okay, so but you have to go in and ask. So I apply, I open this link and I check what are the properties, how are the properties looking like. He doesn't have, I guess he has pictures, but they're not loading. Okay, so the total cap rate, right? Again, it's not a pro forma, right? Current cap rate they're seeing is 8.21%. So you can say that, you know, he's making decent money. He's not making bad money, not great money, but he's making decent money, something we can work with. Now, if we want to increase the cap rate, we can go down in price. We can go 1 million and then cap rate will go maybe to 8.5. Okay, so not a bad deal for us. Okay, so let's go down. He is saying that please to offer blah 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 21 unit 21 multi-family units, single families, blah blah blah, properties are well equipped neighborhood, yada yada yada, strong value add potential. Yeah, okay. Yeah. Okay, so usually seller financing may there's nothing changes. Again, if he's not showing the inside pictures, he's showing all your houses, so that's probably means they are rented, which is good deal for us. If it's rented, that's very good news. Properties look good, like the outside of the property, none of the properties are in a bad condition. Looks like he has taken care of his property decently well. Okay. And the thing is guys, अगर आप इस पोर्टफोलियो पे वो करते हैं, डील करते हैं और सेलर फाइनेंसिंग ऑफर करते हैं, तो ऑफ कोर्स इन डील्स में टाइम लगता है, राइट? मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इसमें शायद 2-3 महीने लग सकते हैं पूरी कंप्लीट होने में, बट इसकी कोई 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट? तो कमीशन भी ज़ाहिर है 11 टाइम्स होता है, बट इसमें वेट ज़्यादा होता है, थोड़ी नेगोशिएशन ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको फ्रेंडली होना पड़ता है, ये सब चीज़ें. Okay, I want to call, but the problem is my number is not attached on this one. Okay, let me switch this to the one we're looking at. Change stream. Okay, so this is the property. Let's find out the number. I've already should sign in already.
Okay, so let's make a call on this portfolio. I will make sure somebody will have to follow up. Okay, I will give this lead to one of you guys who's in the Discord right now. Let's talk to Thomas. 312. Hello? Hey, is this Thomas? Yes. Hey Thomas, I'm looking at the Crexi, one of your, I think, clients' portfolio, 21 units, Cake portfolio. Do you have a couple minutes to chat on that? Which one? It's a 12 unit. It's Cake portfolio. I don't know how to pronounce this. Like a 12 unit? Yeah, it says, sorry, 21 unit. It's 1.2 listed at. The Schuler one? I think so. As about. Yeah, that one's currently off the market. Oh, it's off the market. Because I see, I was wondering, it's at 260 days on market. So I was wondering if it's gone or not. Yeah, that one's gone. Okay. We got to update correctly. Oh, okay. No worries, no worries. Thank you so much. Take care. Okay, bye. Okay, so this property is gone. So usually this is also the issue sometimes that the investors, the agents will not update Crexi. Okay, the student housing, we checked it off. RV packs, apply. And okay, so like I told you, something like this could be here, but again it says register to bid, right? We're not bidding. You cannot bid because it's a bank property. I think we should be able to auction, so we should be able to remove the auctions here. Call right here. So highest and the best, and take it off. Auction, take it off. Call for offers, take it off. On marking is on market's all we need. We don't want to sign up, so this would be the good ones. Let me quickly check what we have. Say how can we make offer on those. एक बार फिर मुझे कैलकुलेशन बता दे. Amen, which calculation are you talking about? आप कैलकुलेशन कैश ऑफर की बात कर रहे हैं, सेलर फाइनेंस की बात कर रहे हैं, किसकी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं? And I said how can we make offer on these? Very simple, same thing, right? अगर आपने जैसे $5 million की प्रॉपर्टी है, आपने उसको खोला, 5 million is not a cheap house. Let me 1 second. तो आपने $5 million की प्रॉपर्टी इसको खोलना है बेसिकली, और इसको खोल के आपने इसका नाम देखना है. यहाँ पे 2 एजेंट लिखे हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंस इसका स्ट्रक्चर है. लुक इस तरह का आपको दिखेगा. नीचे 2 एजेंट है, इसका मतलब ये दोनों एजेंट ने मिलकर ये प्रॉपर्टी को मार्केट पे लाया है. ठीक है, तो जो भी कमीशन होगा वो इन दोनों में स्प्लिट होता है. ठीक है, क्योंकि ये बिग प्रॉपर्टी है, मोर देन 1 एजेंट मे बी नेसेसरी. ठीक है, बट हम अभी भी अपने पास आते कोई एजेंट नहीं ले जा रहे. अच्छा, आपने इसका व्यू नंबर करना है. व्यू नंबर तभी दिखेगा तब आप इसमें आपने वो करी भी होगी, इस पर क्रैक्सी पे साइन अप किया हुआ होगा. ठीक है, इट्स फ्री. तो आप क्रैक्सी पे साइन अप करो और उसको आपका नंबर मिल जाएगा. यू कैन कॉल. ठीक है, कॉल नहीं कर सकते तो आपने टेक्स्ट करना है यूएस के व्हाट्सएप नंबर से या किसी भी नंबर से यूएस के. ठीक है, अगर नहीं टेक्स्ट कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, तो आप उसको ईमेल करो. ठीक है, बट जब आप ईमेल पे क्लिक करोगे, आई थिंक मोर लाइकली इट्स नॉट गोना शो मी द ईमेल राइट हियर. या तो ईमेल वो क्रैक्सी सिर्फ उन लोगों को देता है, शो कराता है. फ़ोन नंबर तो कर देगा शो. ईमेल एक्सेस अवेलेबल ऑन द पेड प्लान्स, अपडेट टू अनलॉक. क्रैक्सी का एक पेड वर्जन भी है जिसमें वो ईमेल
दे देता है, ठीक है। बट वी आर स्मार्ट, वी डोंट नीड टू पे। तो आपने करना है ये कि जेम्स का नाम लेना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है, और जेम्स का नाम पूरा आपने यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, अब इस नाम के जेम्स बहुत सारे होंगे, तो आपने देखना है ये जो नीचे नाम लिखा हुआ है इस कंपनी का, किलर एंड शेरी स्टेट्स। ओपन द जेम्स वेबसाइट, जेम्स प्रोफाइल, ठीक है। तो ये रहा जेम्स, ये रही इसकी कंपनी। आपने कंपनी का नाम कॉपी करना है और जेम्स का नंबर आपने वैसे ही काम किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है, इसको सर्च कर देना है। ये आ गया जेम्स का प्रोफाइल उसकी अपनी ब्रोकर से, ठीक है। उसकी प्रोफाइल खोलनी है और आपको यहाँ पे ईमेल मिल जाएगी इसकी, वो ये ईमेल ही खुल रही है टेक्निकली, तो ये आपको उसको ईमेल मिल जाएगी, किसी पे भी ईमेल कर दें, यूर गुड टू गो, ठीक है। वेरी इजी टू फाइंड ईमेल्स। ईमेल आ गई, आपने उसको ईमेल करनी है, हे जेम्स, उसको बताना है कि भाई मैं आपकी इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ। अगेन आपने एड्रेस डालना प्रॉपर्टी का, राइट। प्रॉपर्टी बोला कि मैं इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ, इज इट करंटली वेकेंट और ऑक्यूपाइड, हाउ मच ऑफ इट इज ऑक्यूपाइड, राइट। थोड़ा बहुत चेंज करना है आपने वर्डिंग, उससे पूछ लेना, क्योंकि ये काफ़ी दिन से लगी हुई है, 500 दिन से। सो आई डोंट नो कि स्टिल ऑन मार्केट, तो आप उसको ईमेल करो, उससे पूछो इज इट स्टिल ऑन मार्केट, मे बी दैट वुड बी द गुड फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वो बोलता है हाँ मार्केट पे है, तो ठीक है, फिर आप उसको नॉर्मल कन्वर्सेशन में जाओगे, ठीक है। अगर आप उसको व्यू OM करो, OM बोलते हैं ऑफरिंग मेमोरेंडम, ठीक है। OM बेसिकली आपका OM क्या किस तरह बोलते हैं, जैसे एक प्रोफाइल पिक्चर होती है ना, जिस पिक्चर से आपको पता चलता है बंदा दिखता कैसे, इसी तरह प्रोफाइल पिक्चर होती है प्रॉपर्टीज़ की, जिससे आपको पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी में है क्या, राइट। तो वो प्रॉपर्टी का लोकेशन बताते हैं, सारा मैप बताएंगे, प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन होगी, इस प्रॉपर्टी के करीब क्या है, दूर क्या है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, एवरीथिंग, ठीक है। बट हमें जो है ना, सबसे काम की चीज़ इसकी इनकम है। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो कहाँ पर है, क्या मसला है, क्या मसला नहीं है, हमें सिर्फ इनकम देखनी है कि ये पैसे बना कितने रही है, ठीक है। और हम सिर्फ उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि हमें हमारी नेट इनकम मिल जाए, नेट ऑपरेटिंग इनकम, इट्स कॉल्ड NOI, ठीक है। NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम वो होती है कि हम सारे खर्चे निकालने के बाद, सारे मसले मसाइल को निपटाने के बाद कि जो पैसे बचते हैं, जो हम जेब में रखते हैं, राइट, वो बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम प्रॉपर्टी टैक्स से पहले निकल जाती है, ठीक है। तो सारे प्रॉपर्टी टैक्स निकल गए, एक्सपेंसेस निकल गए, किसी का बाथरूम टूट गया उसके पैसे, किसी का पंखा नहीं चल रहा उसके पैसे, मेंटेनेंस कंपनी के पैसे, वैकेंसी के पैसे, कैपेक्स के पैसे, सारे पैसे निकलवाने के बाद कि जो पैसे बचते हैं ना, वो होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट, राइट। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे आप समुद्र में नेट डालो और जो भी चीज़ें पकड़ी जाती हैं वो हमारे काम की होती हैं, राइट, सारा पानी चले जाता है, राइट। तो वो सारे एक्सपेंसेस पानी की शक्ल में चले जाती हैं, जो नेट हमारा बचता है, नेट जो चीज़ें बचती हैं वो हमारे काम की होती हैं। तो इसी तरह नेट इनकम वो चीज़ होती है जो बची हुई चीज़ें होती हैं, सारी बेकार चीज़ें चले जाती हैं, ठीक है। तो नेट ऑपरेटिंग वो कराती है। मैंने आपको ग्रोस बताई थी कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम से पहली इनकम होती है वो होती है ग्रोस इनकम। उसका मतलब होता है कि सारे कचरों के साथ की इनकम, राइट। अभी इसमें से हमने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं निकाला है, हमने कोई भी वैकेंसी कुछ भी नहीं निकाला, बस जितने पैसे प्रॉपर्टी बना रही है मंथली उतने पैसे। और मैंने बताया था कि ग्रोस का मतलब बदबू, बुरी, गंदी चीज़, राइट। तो ग्रोस बेसिकली आप ले सकते हैं कि ये ग्रोस रेंट है, सारी मिलावट के साथ का रेंट है, ठीक है। इसको मिलावट को हटाएंगे तो फिर नेट बनता है, जो नेट हम जिसकी नेट इनकम हम बोलते हैं, और हमें सिर्फ नेट इनकम की ज़रूरत है। अगर आपके पास वो दे ही आपको सिर्फ ग्रोस रेंट नेट इनकम नहीं दे रहा, तो फिर ग्रोस रेंट में से आपने 35% का 40 से 35% का एक्सपेंस निकालना है, ठीक है। और जो कैलकुलेटर में नीचे आता है ना 10%, 10%, 5% हम करते हैं, बस उसमें कहीं पे भी आप 35% कर दें तो ऑटोमेटिकली उतने में से 25% निकाल देगा, ओके। अब अगर जैसे ये जो OM है हमारे पास, ऑफरिंग मेमोरेंडम, जैसे प्रोफाइल पिक्चर जिसको मैं बोल रहा था, इसमें सब कुछ है, उसमें सभी कुछ है, बस क्या नहीं है वो है नेट इनकम नहीं है, राइट। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लमैटिक। और दूसरी चीज़ आप देखें, अगर इसकी शक्ल देखें, ये सिर्फ जो है ये बिल्डिंग बनी नहीं है, राइट। ये प्रोजेक्ट है जो बनेगा फ्यूचर में,
जब भी इन्होंने एक कार्टून टाइप की स्ट्रक्चर भेजा है, राइट, और वी डोंट नीड दैट. This one doesn't looks like cartoon, it already made it, but this looks like, plus I don't think कि कोई इसमें रह रहा है, ये खाली प्रॉपर्टी है. I think they are just selling it as it is. तो I think we will move on from this. And आपने देखा यहाँ पे कैप रेट भी इसने छुपाया हुआ है, राइट, क्योंकि उसको पता है कि मैं कैप रेट लगाऊंगा तो लोग भाग जाएंगे, लोग इसको देख के भाग जाएंगे, तो मैं नहीं लगाता कैप रेट. ओके, सो लेट्स गो टू दिस वन. This property is 1.69 million, not bad. 400 days on market, right? अब आप देखो कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि इनके ख़रीदने वाले कम लोग होते हैं, राइट, इनके नॉर्मल आप जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर नहीं है, इनके ख़रीदने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो कि टॉप 1% में आते हैं, राइट, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टर वाले लोग होते हैं या कंपनीज होती हैं. तो इसमें कंपटीशन भी बहुत कम होता है, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक बहुत टाइम तक मार्केट पे आती हैं और बहुत टाइम के बाद जाके सेल होती है, ठीक है. और जब बहुत टाइम तक मार्केट में आती हैं, इनको पता चल जाता है कि इन्वेस्टर तो उसको नहीं ले रहे या बैंक नहीं ले रहा, तो हमें इसकी प्राइस कम करनी है या हमें क्रिएटिव टर्म्स पे ये प्रॉपर्टी बाई करनी है, ठीक है. तो इस वजह से 90% ऑफ दीज डील्स आर बॉट ऑन अ क्रिएटिव टर्म. इस पर कैश ऑफरिंग चलता है, इसमें बैंक की फाइनेंसिंग नहीं चलती. इस पर जिससे हम सेल्फ फाइनेंसिंग कर रहे हैं ना छोटे घरों पे, उसी टाइप का स्ट्रक्चर्स यहाँ पे चलता है, ठीक है. अब यहाँ पे इसने कैपिटल बताया हुआ है 6.2, यहाँ पे लिखा हुआ है VUOM, ठीक है. आप VUOM करते हैं और इसकी जो मैंने बताया था जैसे प्रोफाइल पिक्चर होती है, शक्ल पता चल जाती है बंदे की, इसी तरह प्रॉपर्टी की शक्ल हमें यहाँ पता चल जाती है. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, हमें किसी चीज़ की टेंशन लेनी है, हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है, हमें नेट ऑपरेटिंग इनकम का पता निकालना है, राइट. अगेन इसने सब कुछ बताया हुआ है, एक चीज़ जो नहीं बताया वो नेट ऑपरेटिंग इनकम नहीं बताई हुई, और मे भी इसने बताई हुई है प्रोजेक्टेड NOI. देखिए इसने लिखा हुआ प्रोजेक्टेड NOI, दिस इज, इसका मतलब प्रोफॉर्मा NOI. आई डोंट नो कि अभी क्या चल रहा है, अभी का नहीं बता रहा, वो प्रोजेक्टेड बता रहा है. सो हमने पूछना से कि अभी क्या चल रहा है मुझे ये बताओ, ताकि मैं अभी के नंबर पे रन करूँगा, मैं प्रोजेक्टेड फ्यूचर पे नंबर नहीं बताऊँगा. जैसे इसने कैपिट अभी का बताया हुआ है 6.2, और प्रोफॉर्मा मतलब इस पर आप काम करके चीज़ें फिक्स करके 8 तक पहुँच सकते हैं, ठीक है. Let's talk to Lindsay. Let's just speak to Lindsay and see what she's talking about and what's the current going cap rate. Text now. Your call has been forwarded to an automated voice messaging system. 56341976444 is not available. At the tone, please record your message. When you've finished recording, you may hang up or press 1 for more options. Hey Lindsay, how's it going? This is Syed. I was looking at one of your listing at Crexy, located at 9th Street, I think, Waterloo. I have a quick question on this. It has a net operating income. I wanted to make sure, is it sort of currently going, and what the structure looks like? What is the sort of occupancy rate going for this property? I'll shoot you a quick message as well, and then we'll go from there. All right, take care. Bye bye. Okay, let me see. So Lindsay ने pick नहीं किया. Let's try one more time. Let's try Philip. Let's see if Philip will pick up on this property. Four, 6. Hello. Hello, is this Flip? Yeah, this is. Hey Flip, I'm looking at Crexy, one of your listing, and on 9th Street, Waterloo. Do you have a couple minutes to chat? Yeah.
Sorry, I just had to step outside of a coffee shop here. No worries, no worries. I'll try to be quick. Um, the property is still on the market. It's been a while. It is, yep. Yeah, Yep. Is there anything wrong with it? I'm just wondering why hasn't it moved? He just hasn't dropped the price. It has some deferred maintenance. Parking lot needs to be redone. Needs an overlay of asphalt. We got Okay. a quote for that for about $30,000, and then it needs the front steps need to be replaced essentially. So I don't have a quote on that yet. Right. So is it like the staircase or whatever, the metal one at the front? Is it? Yeah, yep. They need to be replaced. Yeah. Okay. Okay, and that's pretty much it. Like, how's the condition from inside of the units? The units are actually nice. He's done good work to them over the years. He's just Okay. trying to manage it from afar, and it's not working. It's in a family trust, and he's the one responsible for it, and it's just not. It's time to move on from it. Okay, I see. Good I see. assets, right in front of the hospital. They're good units. It just needs someone else to come in and do some things. But yeah, Okay, so I good mean, property. I've been involved with it for a while. yeah. Do you think he would be interested in some sort of a seller financing offer, or he just want No, to they get don't. out? They don't really like that. They get it. They get it all the time. Okay, and let's say if you were to go conventional or cash or whatever, like he has no wiggle room on this property. I'm assuming because it's been on the market for a while. No, there's wiggle room on the property if you came in with a straight up offer. Yeah, Yeah. Okay. definitely. Okay. Yeah. Okay. What Yeah, I'll he's, do he's is willing then, to work a deal on it. So yeah. yeah, I will run the numbers on terms of the conventional and see where we at Okay. on that. I would Okay. like to have the T12 if you have it available for this. Yeah. Can you text me your email? Sure. And then I'll send it to you. I'm traveling right now and I Okay. don't have Wi-Fi where I'm standing, but No I'll worries. send it to you a little bit later when I'm back to my hotel. No, that's perfectly fine. Sounds good, man. We'll talk then. Thank Yeah. you. Awesome. Sounds great. Thanks for reaching out. For sure. Talk soon. Bye. Thanks. Yeah, bye. ओके सो कन्वर्जेशन में हमने 2-3 सवाल पूछने अंदर की यूनिट की कंडीशन कैसी है, घर में कुछ काम तो नहीं है, और ये सवाल उससे लाजमी पूछना है कि ये घर 1 साल से ज़्यादा का पड़ा हुआ है, क्यों सेल नहीं हो रहा, राइट। ये बात एजेंट के लिए बहुत बुरी होती है और एजेंट को छुपाने के लिए वो सच बता देता है। अब उसने सच बता दिया कि भाई एजेंट को सेल करना है और एजेंट प्राइस कम नहीं कर रहा। अब जैसे ही आप बोलते हैं कि एजेंट प्राइस कम नहीं कर रहा, तो हम सेलर फाइनेंस की ऑफ़र लेके आ सकते हैं ईजिली। मैंने उससे पूछा भी सेलर फाइनेंस लेगा नहीं लेगा, इसने बोला नहीं, उनको ऑफ़र मिलती रहती है बट वो रिजेक्ट करें, राइट। बट हम जो ऑफ़र लेके जाएंगे बेसिकली वो, हम इस पर अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम इस पर एक्स्ट्रा की ऑफ़र लेके जाते हैं। हम इस पर 10% में भी ऐड कर देते हैं और चेक करते हैं कि ये उस पर हिलेगा ही नहीं हिलेगा, राइट। अब 1.6 मिलियन का 10% इज़ अ लॉट ऑफ मनी, इट्स नॉट अ स्मॉल मनी, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। प्लस इस घर में काम भी है, जिसमें 2 काम है। एक इसकी जो इसकी स्टेयर्स हैं उसको फिक्स करना है, और इसकी जो आप देख सकते हो इसकी स्टेयर्स इतनी बुरी लग नहीं रही है वैसे तो, आई थिंक इट्स फाइन, बट ये जो स्टेयर्स दिख रही है ना आपको ऊपर से नीचे, जो फ्रंट की स्टेयर्स है इस अपार्टमेंट में, इनको फिक्स करना है, और पार्किंग लॉट फिक्स करना है ये वाला। और पार्किंग लॉट भी लुक्स ओके, बट आई थिंक इस पर लाइनें नहीं डली हुई येलो वाली, और मे भी कहीं से टूट रहा होगा तो वो बनाना है। बट अगर इन दोनों के साथ आप उसको ऑफ़र देते हैं 10% हाई की विद 10% डाउन, मोस्ट लाइकली ही विल बी इंटरेस्टेड, ठीक है। सो somebody has to take this one। मैं उससे को ईमेल करता हूँ। Actually, who wants to take this property? One second. Who wants to take this property? Add me. One second, guys. I think I've been missing someone. तो बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हम मैं कर रहा हूँ कॉल, ठीक है। मैं कॉल कर रहा हूँ सबको, कंपनीज़ को, डिफरेंट घरों को, ठीक है। जो लीड गुड होती हैं मैं उनको जो हूँ अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को जो है उसको फ़ायदा हो, और ताकि वो फिर उसको फॉलो अप करें, एंड देन वी विल गो फ्रॉम देयर।
दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों में से जैसे हम लोग मेनली पाकिस्तान से हैं या फिर ओवरसीज़ से हैं, तो आपको ज़ाहिर मसला होता है कि इंग्लिश इतनी सही नहीं बोल सकते या आप थोड़े डर रहे होते हो उससे इंग्लिश में बात करने की। दैट्स ओके। इसका बेसिकली हल ये है कि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ ना, आप उनकी लीड्स को फॉलो अप करो और उनकी लीड्स को उससे ईमेल पे बात करो। तो अब जब आप उसकी लीड पे, अब जैसे हमने ये प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी पे, तो इसके बंदे से मैंने ऑलरेडी फ़िलिप से बात कर ली हुई है। तो फ़िलिप को अंदाज़ा है कि आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टर, मैंने क्वेश्चन पूछ लिए, मैंने सेल्फ फाइनेंस की ऑफ़र दे दी, सब कुछ उसको अंदाज़ा। तो वो ये नहीं पूछेगा कि भाई मुझे मुझे फ़ोन करो, वो अब नहीं बोलेगा। वो बोलेगा ईमेल पे आ गए, ठीक है, दैट्स इट, मैं इसको अपनी तरफ से देखता रहूँगा। ठीक है, तो आप हु इज़ गोना टेक दिस, कौन लेना चाह रहा है ये वाली प्रॉपर्टी? Heather said me. Okay, so Heather, इसको give me your email, I'll give him your email. तो उसको लगेगा कि आपने ही बात करी है, and then you will continue to talk to him as we are doing. ठीक है, what's your email Heather? उसके पास फ़ोन नंबर मेरा है बट ईमेल आपकी है, तो आप ईमेल पे बात करते रहो, फ़ोन पे उसको कुछ भी मैसेज करना होगा तो मैं उसको फॉलो अप कर लूँगा। So that's guys, if you're not in a part of Discord, you should be. You should be. Let me see. Okay, give me 1 second, guys. Let me grab this email. ओके ओके, तो मैंने उसको आपकी ईमेल दे दी है। ही इज़ गोना सेंड यू द रेंटल इन्फॉर्मेशन। जब वो रेंटल इन्फॉर्मेशन सेंड करे तो आपने उसको बस बोल देना है यही कि फिर उसको जैसा सेल्फ फाइनेंस के हम ऑफर दे रहे हैं इस तरह, उसी तरह आपने स्टार्ट कर देना है। ठीक है, हैज़ द डील हैज़ बिन साइन टुडे। हमाद, देयर इज़ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द एजेंट। तो आप एजेंट से फॉलो अप करो, उसको सब कुछ दे दिया है हमने, सारी चीज़ें। उसको बैंक स्टेटमेंट भी चले गई, उसको पोर्टफोलियो भी चला गया, उसको क्रेडिबिलिटी भी चला गया है, उसका रिप्लाई नहीं आया कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ठीक है, तो आप फॉलो अप करो, टेल हर दैट वी आर वेटिंग ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट, yeah, we are waiting on your contract, the company is ready to move forward. Okay. Heather, also make sure कि आप इसको उस पर डाल दें, CRM पे। ठीक है गाइज, अगर आपने CRM नहीं ज्वाइन किया हुआ Bitrix24, तो एज अ कंपनी वी हैव अ CRM जिसमें हम सारी प्रॉपर्टीज़ डालते हैं और उसको फॉलो अप करते हैं। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप फिगर आउट कर सकें। Seller finance on the listed price or 10% on top of the listed price. Because he said no for the offer of seller finance, start with the best 10% on top. ठीक है, it will start the conversation going. Okay, so 10% on the top, go with that, and then 10% down. Okay, and then see if what his response is gonna be. Tell him like I understand कि बाकी सेलर फाइनेंस की ऑफ़र आपको मिल रही है, आपने रिजेक्ट करी, बट मेरी ऑफ़र 10% ज़्यादा की दे रहा हूँ, राइट? मैं आपको 10% की ज़्यादा दे रहा हूँ, दैट्स वाई आई थिंक इट्स बेटर फॉर द सेलर। ओके, मैंने इसका कॉन्टैक्ट सेव कर लेना है, 3719 अगर मुझे सेलर आके बोलता है कि भाई नहीं मुझे जो है ना डाउन पेमेंट ज़्यादा चाहिए, तो फिर हमको पता है डाउन पेमेंट ज़्यादा चाहने का एक और तरीका है, हम उसको फिगर आउट कर सकते हैं। बट सेलर को ना डिस्कशन पे लेके आना है, क्योंकि वो 400 दिन से मार्केट पे है। सो इमेजिन 400 दिन से वो बोल रहा है ये कोई तो ले ले, इसको कोई तो ले ले, कोई तो ले ले, और वो नहीं बिक रही, राइट? तो ही इज़ वेरी फेड अप राइट नाउ एंड ही जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ इट, बट वो फिर भी प्राइस कम नहीं कर रहा।
तो ठीक है, आप प्राइस कम नहीं करो, हम उल्टा आपको 10% और देते हैं, दैट्स इट। Do I have to check NOI? Yes, you have to check NOI. You have to find the net operating income. NOI वैसे ये लिखी हुई है सामने, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम ये लेंगे आप, प्रोफॉर्मा NOI नहीं लेंगे, ठीक है। प्रोफॉर्मा का मतलब होता है ख्याली NOI, बस ये समझ लो, ख्याली NOI। वी डोंट टेक ख्याली, वी लिव इन द रियलिटी। आंसर, मुझे एक बार जस्टिन की डील की कैलकुलेशन बता दें मॉर्गेज के बाद। ओके, मैं उसको बेसिकली ये था कि उसमें उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ थी, हमने उसको चारों का जो उन्हें पे कर रहा है वो निकाला, ठीक है। मंथली जो पे कर रहा है वो ऑलमोस्ट बनता है 4500 समथिंग के करीब। तो हमें करना यह है कि हमारी जो मंथली पेमेंट जो हमने 1200 इसको दी थी ना, अब वो नहीं चल सकती, क्योंकि हमें कम से कम 4000 तक की पेमेंट देनी है उसको, ताकि वो अपने पूरे बैंक को वो पे कर पाए, ठीक है। अब मसला ये कि हम ज़रूरी नहीं इसको पूरी पेमेंट दें, हम उसको कम की भी पेमेंट दे सकते हैं, बट इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग हाउ वी गोना फिगर दिस आउट। क्योंकि हमें अगर 4000 की पेमेंट देते हैं तो ही हम घर पे वो कर पाएंगे, और फिर मिस्टर सर को बाहर निकाल देंगे, राइट। तो मैंने उससे अभी मैसेज किया है, उससे पूछा है कि मिस्टर सर कितना पे करेगा और हम कितनी डाउन पेमेंट पे करेंगे। तो ही सेड आई एम वेटिंग ऑन सेलर टू रिस्पॉन्ड। तो वो सेलर का वेट कर रहा है, जैसे ही कुछ उसका रिस्पॉन्स आता है आई विल लेट यू नो, ठीक है। बट आप जस्टिन के पास वापस जाओ और जस्टिन से बोलो कि जस्टिन, do you have any other properties that I can run numbers on? My company is already working on this with you. That's great. I want to see if there's any other thing I can do with you, right? Because I like dealing with you, blah blah blah. आपको इस तरह बोलो, और जस्टिन फिर आपको 1-2 प्रॉपर्टी और देगा जो कि सेलर फाइनेंस की होंगी। इसके पास अगर एक सेलर फाइनेंस की है ना, तो उसके पास लाजमी 1-2 और भी होंगी, क्योंकि सेलर फाइनेंस को ये टर्म समझता है, इसको पता है सेलर फाइनेंस क्या होती है, राइट। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम टू फाइंड यू मोर प्रॉपर्टीज लाइक दैट, ठीक है। तो आप जाके बात करो, बेसिकली उसका नंबर्स की कैलकुलेशन ये है कि उसने सारे मॉर्गेज स्टेटमेंट भेजी है, मॉर्गेज स्टेटमेंट में जो हर पेमेंट पे इसको मंथली देना है इज़ क्वाइट हाई, ठीक है। तो वी नीड टू फिगर आउट हाउ मच हम पे करेंगे और हाउ मच मिस्टर सेलर पे करेगा। मेक सेंस? Yeah, so that's pretty much it, guys. Guys, I think yeah, so I think what I'll do now is I'll probably end the stream here. I need to do a couple more things, couple more agents, and some we'll also have to talk to one of the deal that we have. I'll go do that. In the meantime, guys, make sure before you finish today, send 10 offers, okay? In a week, you want to make sure you have at least 2 से 3 ऑफर आप डाल रहे हैं बड़ी जॉइंट्स पे, राइट, $1 million प्रॉपर्टीज एंड मोर, ठीक है। और ज़्यादातर आपका फोकस है सिंगल फैमिली या मल्टी फैमिली बट रेजिडेंशियल के, ठीक है। वो जो डील होती हैं वो काफ़ी जल्दी क्लोज होती हैं विदाउट एन इशू, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप 2 से 3 हर वीक एक बड़ी प्रॉपर्टीज़ पे जा रहे हैं। अगर बड़ी प्रॉपर्टी नहीं जा रहे तो आपने कोशिश करना है कि आप डबल डाउन ऑन द स्मॉलर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। So that's all for today, guys. I'll see you guys tomorrow, inshallah. Hope everything goes well with you. Good luck with everything, and we go from there. All right, take care. Bye bye. All right, TikTok and YouTube. Hopefully everything is good. How do I end this live? TikTok. Any questions? No questions. Somebody was here. Okay. There's no questions, so I'm going to end everything, guys. So we'll see you tomorrow live on the TikTok as well. Inshallah. I think Malang is Luminous. Hi, Luminous. Hopefully your deal is doing good. Let me know if you have any question. I'm going to end the live here, though. I'll see you later.